Now come to the role of pharmacist in immunization, our main actual theme. Obviously, a pharmacist has been playing its key role in the immunization services. अगर हम कुछ पीछे चलें in 80th century की बात करें तो तब जो pharmacist जो रोल था इम्यूनाइजेशन सर्विसेज में, इम्यूनाइजेशन के अंदर फार्मासिस्ट वर ओनली इन्वॉल्व अप टू द स्टोरेज ऑफ द वैक्सीन्स इन द फार्मेसीज, नंबर 2 डिलीवरिंग ऑफ द वैक्सीन्स टू द फिजिशियंस, नंबर 3 द प्रिपरेशन ऑफ द एंटीटॉक्सिन्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड आल्सो द dispensing of the vaccines. So this was the role of the pharmacist up to the 18th century. But later on, in the 20th century, the pharmacist evolved as educators of the vaccination services. What does mean by educators? Means they provide the information about the vaccines and also they recommended for the vaccine. Along with educators, the pharmacists also evolved as the promoters. The promoter word bole ya facilitator word bole, so they also act as, they also perform their role as the promoters or the facilitators. So how they facilitate immunization services? That community pharmacists, they hosted the other healthcare professionals in their community pharmacy. They acted as a host for the other healthcare professionals, जिसमें physicians और nurses आ गए, to provide the immunization services. तो pharmacist का ये भी रोल था in 20th century. ठीक है, 18th century तक just storage और dispensing तक, उसके बाद they acted as evolved as the educators and the facilitators and the promoters of the vaccination services. अच्छा, इसके अलावा एक और भी रोल है फार्मासिस्ट का, बट आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन. टिल नाउ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्यूनाइजेशन थ्रू डिफरेंट, ये जो टॉपिक में एक वर्ड लिखा गया है टेक्निक्स, तो वर्ड टेक्निक बोले या बेटर टू से दैट देयर आर डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट सेक्शंस आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर डिफरेंट वेज थ्रू विच द फार्मासिस्ट हैज बीन प्लेइंग his or her role in the immunization services. There are two sides. Number one, what is the guideline? Pharmacist का जो vaccination, immunization के अंदर रोल क्या होना चाहिए, उसकी guidelines क्या होनी चाहिए. एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है कि what is the actual practice, what implementation of those guidelines. अब ये दो different sides हैं. अब डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी रूल्स. फार्मेसी एक्ट में काफ़ी चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं. देयर आर सो मेनी रीजंस ऑफ दैट वन. अदर कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें भी देयर में भी डिफरेंट सिचुएशन. तो देयर आर टू साइड्स. एक तो गाइडलाइन का होना फार्मासिस्ट के रोल के बारे में, और दूसरा उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक है डिफरेंट रीजन्स में. तो मैं यहाँ पर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रेफरेंस कोट करते हुए कुछ गाइडलाइंस हैं अबाउट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्यूनाइजेशन. ठीक है, तो देर आर डिफरेंट रोल्स, देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, देर आर डिफरेंट सेक्शन आर एरियाज आर रूट्स थ्रू विच द फार्मासिस्ट हैज बीन प्लेइंग his or her role in the immunization services. Number one, that is the history and screening. This is one of the way, this is one of the technique through which the pharmacist has been performing his or her role in the immunization services. What does mean by history and screening? Here the actual point is the screening. Screening means, as you know that द रोल ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में बेटा आप लोगों को तो मालूम है कि एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है. रेशनल जो है थेरेपी, जिसमें प्रॉपर डोज होना चाहिए, प्रॉपर जो फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर ड्यूरेशन, प्रॉपर पेशेंट. सो उसी से रिलेटेड है ये स्क्रीनिंग का वर्ड, कि स्क्रीनिंग मीन्स टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल पेशेंट which has the need of vaccination or immunization. This is the meaning of the screening. So for doing this job of screening, there are multiple tasks, multiple steps or multiple ways which a pharmacist has been playing. Pharmacist is involved along with other healthcare professionals. Pharmacist is involved in the healthcare setup
where the pharmacist has to play or has been playing such task to identify the actual patient which has the need of immunization. So the different ways or techniques are the steps which a pharmacist take in immunization services for the screening purpose. They take the histories, gather the histories of the patient regarding the immunization. दूसरा, पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए, पेशेंट को इनकरेज करता है फार्मासिस्ट फॉर द वैक्सीनेशन प्रोफाइल. वैक्सीनेशन का एक पूरा शेड्यूल होता है, एक प्रोफाइल होता है, उसके लिए इनकरेज करना चाहिए. नंबर 3 पॉइंट के फार्मासिस्ट गोइंग टू इशू द पेशेंट वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स टू पेशेंट, पेशेंट को इशू करता है. उसके अलावा pharmacist is preventing the immunologic drug reactions. So these are 4 different you may say that steps or task which is done in the screening area in order to provide the vaccination services. अच्छा, यहाँ पर जो what I will suggest here that each institution should implement the consistent systematic monitoring system and the quality indicators in order to identify each patient for the adequacy of the vaccination. हर इंस्टीट्यूशन में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिससे वो इंडिकेट कर सकें कि कोई भी पेशेंट उनकी सर्विस, उनके सेटअप से अगर जा रहा है तो वो उसको मालूम होना चाहिए कि सच पेशेंट हैज़ द नीड ऑफ द वैक्सीनेशन. एक तो ये सजेशन है. दूसरा कि ऑल दोज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स which have this responsibility of indication of identification, so they should have the knowledge, उनको एक knowledge होनी चाहिए. They should have the responsibility to provide the vaccination or to arrange the vaccination to the concerned patients. So these should be implemented in each institution regarding the screening purpose of the pharmacist. Okay, there are different types of the screening, about 5 to 6 types of screening, which are occurrence screening, diagnostic screening, occupational screening. There are different types of screening. When a pharmacist or other healthcare professional in any organization is going to identify the needy person of vaccination, so there are different types. I'm not going in deep of all these types, but just want to make your concept clear regarding any 1 or 2 of the types of the screening. Let's suppose occurrence screening. अभी occurrence screening जो है, this is done at some specific time. Let's suppose there is any patient which has been admitted in hospital or is going to be discharged from the hospital. So at that time, the pharmacist should identify that either this patient has the need of vaccine or not. So this is known as the occurrence screening. Other type, occupational screening. So this is done for the health care providers themselves, जो भी हेल्थ जो फ्रंट लाइन पे जो होते हैं. जैसे कि अभी हम कोविड की बात करें तो अभी कोविड में ये चीज़ आइडेंटिफाई करना कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैव द नीड ऑफ द कोविड वैक्सीन. जैसे कि अभी फ्रंट लाइन पे जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, MBBS फार्मासिस्ट, इवन इन जामशोरो, ये जो लम्स लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल जो हॉस्पिटल है वहाँ पर मौजूद जितने भी डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, दे आर गेटिंग द कोविड वैक्सीन. So this is to identify the need of vaccination to the healthcare providers. After screening, the second technique or second area that the pharmacist is involved in vaccination service, that is the counseling. Counseling जो है वो एक pharmacist की अपनी एक जो है मिल्कियत है. तो counseling के बारे में जो है how the pharmacist is going to play its role, that once a person has been identified that that person has the need of vaccination, so pharmacist is going to advise that patient about the vaccination need. ठीक है कि उसको वैक्सीनेशन की नीड है, उसको इन्फेक्शन के सीवियरिटी के बारे में उसको एडवाइस करें
और उसको इनकरेज करे कि वो इम्यूनाइजेशन को एक्सेप्ट करें, बिकॉज देयर आर सो मेनी पेशेंट्स हैविंग डिफरेंट बिलीव्स। जितने भी बेटा बैरियर्स हैं, उस बैरियर्स में काफ़ी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि पेशेंट्स आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। सो द पेशेंट फार्मासिस्ट रोल इज व्हाट, टू convince the patient to accept the immunization service. Pharmacist should convince the patient about the risk of the infection, because the pharmacist has identified in previous area and screening, pharmacist has identified the need that this patient has a need. Now the pharmacist duty is what, role is what, to convince the patient about the risk of the infection, okay, about the acceptance of the immunization, okay. Beside this one, the pharmacist role is what, to make aware the patients about the efficacy and safety concerns of the vaccine. So this counseling area or counseling task or counseling technique is done through different ways. Let's suppose अगर हम ambulatory care की बात करें तो वहाँ पर ये जो सर्विस है काउंसलिंग की, that is done by different ways. कि individual forms or mails are sent to the patient. अच्छा, काउंसलिंग का जो है सिर्फ ये नहीं कि पेशेंट के साथ डिस्कशन करना, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करना, उसके साथ टच में रहना। ऐसा नहीं कि वंस पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको काउंसिल किया, पेशेंट चला गया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म। नहीं, फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी ये भी है, रोल ये भी है कि पेशेंट से कम्युनिकेशन में रहता है। इंडिविजुअल फॉर्म्स होते हैं या मेल्स होती हैं जो पेशेंट्स को सेंड की जाती हैं, उसके साथ टेलीफोन पे रब्ता किया जाता है पेशेंट के साथ, उसके साथ टच में रहने के लिए। अच्छा, कुछ ऐसी जो है एडहेसिव रिमाइंडर लेबल्स भी होते हैं। जो फार्मासिस्ट क्या करता है कि जो भी ऐसा पेशेंट आता है जो उसके प्रिस्क्रिप्शन की जो मेडिसिन हैं वो लेता है, उसके जो कंटेनर्स हैं, तो कंटेनर्स के ऊपर वो एडहेसिव रिमाइंडर लेबल्स जो है ना वो पेश कर देता है, जिस पर वैक्सीनेशन का एक रिमाइंडर होता है, जिस पे लिखा होता है, उस लेबल के ऊपर लिखा होता है कि यू हैव द नीड ऑफ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और यू हैव द नीड ऑफ सच वैक्सीन। This is all about what? This is the role of pharmacist in immunization. How the pharmacist is performing his role in the community regarding the immunization. तो pharmacist का काउंसलिंग के अंदर ये भी रोल है कि वो रिमाइंडर्स देता है, ठीक है। उसके अलावा चार्ट्स होते हैं, कन्वर्जेशन, 1-to-1 कन्वर्जेशंस होती हैं, ठीक है बेटा, मैसेजेस होते हैं पेशेंट को सेंड किए जाते हैं। सो दीज ऑल आर द वेज थ्रू विच द फार्मासिस्ट हैज बीन प्लेइंग हिज रोल और हर रोल इन द कम्युनिटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक एंड इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। सो दीज स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग। नंबर 3, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखना कि इन फ्यूचर में कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, बिकॉज वैक्सीन्स आर कंसर्न विद द ह्यूमन बीइंग। ये एक मेडिसिन हैं जो ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन बीइंग के साथ जो है रिलेटेड है। कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग, कोई भी ऐसा एडवर्स रिएक्शन जो है हो जाए तो देयर शुड बी द रिकॉर्ड। सो रिकॉर्ड मेंटेनेंस इज टू मच इम्पॉर्टेंट। देयर इज द एक्ट इन US, नेशनल चाइल्डहुड वैक्सीन इंजरी एक्ट। दिस एक्ट says that there should be the permanent vaccination record, जो emphasize करता है कि there should be the permanent record. So in documentation, okay, what happens that any patient who receives this immunization or vaccine, तो क्या क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए? रेसिपिएंट्स का नाम और डेट, वैक्सीन के किस डेट पर जो है ना वो वैक्सीन जो दी गई है। उसके अलावा वैक्सीन जो है, वैक्सीन का जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम और उसका जो लॉट नंबर है या बैच नंबर जो बोलें, तो लॉट नंबर है, बैच नंबर भी इंक्लूड होना चाहिए उस रिकॉर्ड में। उसके अलावा वो बंदा जिसने वैक्सीन एडमिनिस्टर की है, जिसको हम वैक्सीनेटर बोलते हैं, तो वैक्सीनेटर का नाम, एड्रेस एंड टाइटल, क्या वो नर्स है, कोई फिजिशियन है, जो भी है, तो वो उस पर इंक्लूड होना चाहिए। तो दिस शुड बी मेंटेन इन द रिकॉर्ड। अच्छा, अब डिपेंड करता है सर्विस टू सर्विस, कंट्री टू कंट्री के कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, बट बेटर टू यूज द ऑटोमेटेड डेटाबेस सर्विसेज। ऑटोमेटेड डेटाबेस सर्विसेज अगर यूज हो, इम्प्लीमेंट हो, टू मेंटेन द रिकॉर्ड एंड टू रिट्रीव द रिकॉर्ड व्हेन एवर देयर इज द नीड, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी आ सकते हैं। इसमें एक और बात भी बताई गई है कि
एज अ बैकअप पर्पज़ कि कभी ऐसा हो सकता है कि आपके फार्मेसी में से जो आपका हेल्थ केयर जो सिस्टम है वहाँ से कोई रिकॉर्ड जो है वो लॉस हो सकता है। तो एज अ बैकअप पर्पज़ द पेशेंट हिम और हर सेल्फ शुड ऑल्सो मेंटेन द वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, उसका पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो फार्मासिस्ट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन द रिकॉर्ड एंड ऑल्सो एनी एडवर्स रिएक्शंस। सिर्फ ये नहीं है कि वैक्सीनेशन दी गई, उसका शेड्यूल जो है टाइम टेबल वो मेंटेन किया गया। रिकॉर्ड इस बात का भी रखा जाएगा कि इनोकुलेशन, वैक्सीन के इनोकुलेशन के बाद अगर कोई एडवर्स इवेंट जो है वो ऑकर हो जाता है तो उसका रिकॉर्ड भी, और उसको रिपोर्ट भी करना पड़ता है। एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग सिस्टम, ये यूएस में है, वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग सिस्टम। ये उसी डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट का में रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए होता है कि कोई भी एडवर्स इवेंट अगर रिपोर्ट हो जाए इसी सर्विसेज में, तो वो एडवर्स इवेंट जो रिपोर्ट किया जाता है वो किस सिस्टम को किया जाता है, वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम को, जो भी वैक्सीनेशन सर्विसेज का हिस्सा होता है। ठीक है, बैकअप पर्पज के लिए पेशेंट्स को भी मेंटेन रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एक डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं रिकॉर्ड रखने के लिए, जैसे कि येलो शार्ट रिकॉर्ड, ये एक डॉक्यूमेंट का नाम है, एक फॉर्म का नाम है जो डॉक्यूमेंट यूज होता है तो रिकॉर्ड द वैक्सीनेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेवलिंग। जो लोग इंटरनेशनली ट्रेवल करते रहते हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज में, और डिफरेंट कंट्रीज में सिचुएशन क्या है वैक्सीनेशन की, दे आर पजेसिंग द येलो शार्ट रिकॉर्ड। तो दिस इज वन ऑफ द वैक्सीन डॉक्यूमेंट which is containing the documentation, the schedule, the name of the vaccine, all these things which are necessary to be maintained। क्योंकि इसी में एक पॉइंट है बेटा जिस पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि एनी एडवर्स रिएक्शन विच इज गोइंग टू बी ऑकर, इट शुड आल्सो बी मेंटेन। अब यू नो दैट वी फार्मासिस्ट, वी आर व्हाट, we are the drug expert, we are experts in any adverse reaction, we know all about the side effects, adverse effects. So if we pharmacists will be involved in that immunization services, so being we the drug custodians, drug experts, we comparatively can play a better role, and we have been playing in different areas of the world in record maintenance, in documentation, in adverse reaction reporting. अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद देर इज द फार्मुलरी मैनेजमेंट, द फोर्थ सेक्शन, फोर्थ वे थ्रू विच द फार्मासिस्ट हैज बीन प्लेइंग। फार्मुलरी management, you all people being pharmacists are familiar with the formulary. Formulary is the list of those medicines which in any hospital or in any health system maintained. Those medicines are purchased, those medicines are used or dispensed. Okay, so formulary management. अब यहाँ पर जो है आप यू आर आल्सो फेमिलियर विथ वन ऑफ द पॉइंट, पीटीसी, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी। किसी भी वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में पीटीसी का होना, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, और पीटीसी का जो रोल है, यू ऑल पीपल आर वेरी फेमिलियर विद दिस वन। तो जो फार्मुलरी जो मैनेजमेंट है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द रोल ऑफ द पीटीसी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। वो ही डिसीजन लेती है अबाउट द फार्मुलरी मैनेजमेंट, और फार्मासिस्ट उस पीटीसी कमेटी का जो है मेंबर होता है। सो यू कैन इमेजिन हाउ मच important the pharmacist is in this PTC or in formulary management. Even you know that अगर कोई प्रिस्क्राइबर है जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, so at the time of prescribing there should be the consultation with the pharmacist. Okay, प्रिस्क्रिप्शन के वक्त भी फार्मासिस्ट की कंसल्टेशन की नीड है। तो कैन यू इमेजिन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फार्मुलरी मैनेजमेंट? Obviously other members will also be the members of the PTC, but pharmacist has been playing a key role in formulary management. So the decision of PTC committee on the selection of the immunologic medicine, immunologic drug के बारे में, उसकी चॉइस के बारे में कि कौन सी मेडिसिन को चॉइस किया जाए, कौन सी होनी चाहिए, so that decision should be concerned with the related immunologic pharmaceutics, इम्यूनोफार्माकोलॉजी, डिजीज एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, तो इट शुड बी रिलेटेड।
अब यहाँ पर फार्मासिस्ट has been playing a key role for providing the information or providing the recommendation. अगर उस PTC का pharmacist member होगा तो you people can imagine the importance of the role of the pharmacist. Pharmacist is the drug custodian. He can give much more efficient information. He can recommend that such medicine should be selected, such should not be selected. Okay. So besides this, pharmacist also maintains and establishes the standards. ठीक है, फार्मासिस्ट क्या करता है, इस फार्मुलरी मैनेज के अंदर फार्मासिस्ट का दूसरा रोल क्या है कि फार्मासिस्ट establishes and maintains the standards for what, to ensure the quality, to ensure the proper storage, and to ensure the proper use of the pharmaceuticals which are dispensed or which are going to be used over there. Okay. उसके अलावा pharmacist will decide, pharmacist will choose between the single dose container or multiple dose containers of the vaccines. वैक्सीन्स सिंगल डोज मल्टीपल डोज कंटेनर्स में मौजूद होती हैं, इंजेक्टेबल्स में होते हैं, ओरल ये फॉर्म्स हैं इसके. तो फार्मासिस्ट विल डिसाइड और फार्मासिस्ट विल चूज. फार्मासिस्ट का रोल क्या है फार्मुलरी मैनेजमेंट के अंदर कि वैक्सीन्स की जो है सिंगल डोज कंटेनर चूज करना है या मल्टी डोज. ठीक है, और ये डिसीजन किस बेस पे लिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द एफिशिएंसी के बेसिस पर, कॉस्ट के बेसिस पर. ठीक है, और जो है रेगुलेटरी कुछ इश्यूज होते हैं उसके बेसिस पर, और सेफ्टी के बेसिस पर ये डिसीजंस लिए जाते हैं. कॉस्ट का इशू, सेफ्टी का इशू, एफिशिएंसी का इशू और कुछ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव्स होते हैं. तो इनकी इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट के पास है. तो फार्मासिस्ट हैज़ बीन प्लेइंग अ बेटर रोल इन फार्मुलरी मैनेजमेंट. ठीक है, उसके अलावा फार्मासिस्ट आल्सो इन्वॉल्व और हैज़ बीन प्लेइंग अ की रोल in managing the cold chain of certain, कि काफ़ी ऐसी vaccines है, most of the vaccines they need the frozen temperature for the storage, for the transportation. So the pharmacist जो है is playing a key role in also this cold chain handling of the such vaccines which requires the frozen temperature. उसके अलावा in this जो है सेटअप ऑफ फार्मुलरी मैनेजमेंट व्हाट द फार्मासिस्ट डू कि ऐसी पॉलिसीज और ऐसा सेटअप और ऐसा सिस्टम शुड बी देयर. वो फार्मासिस्ट क्या करता है कि फार्मुलरी मैनेजमेंट के लिए ऐसा सिस्टम डेवलप करने में हेल्प आउट करता है जो है सॉर्ट आउट कर सके आउटडेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आउटडेटेड प्रोडक्ट्स हो गए हैं या जो पार्शली यूज्ड प्रोडक्ट्स हैं, वैक्सीन के प्रोडक्ट्स या जिनकी डेट आउट हो चुकी है, तो उनको डिस्पोज ऑफ करने के जो बेटर वेज हैं उनको डेवलप करने में भी यहाँ पे फार्मासिस्ट का एक बेटर रोल होता है. ठीक है बेटा, so this was the fourth area, you may call the technique through which the pharmacist has been playing its role.